welcome on this learning platform. We are to do perfect progressive tense today, and what progressive means, that is continuous, and we will be using here verb ka ing form, like talking, singing, dancing, playing. Ing form we will be using here. Let's do the worksheet 1, that is present perfect progressive. What does present perfect progressive means? It means the action which has started in the past and it is continuing in the present. It has not stopped yet. The action is continuous. So its construction should be like this: has, have, been plus past, the present participle. That is present participle. What is present participle? That is we ka ing form, like talking, singing, dancing, etc. So let's do this exercise so that we will have a better understanding. What are these players doing? They are practicing for the coming match against Australia. They have been exercising in the stadium since 6 o'clock in the morning. Here, just mind it, these players are still practicing. They have not stopped yet. Rohit has been running around the stadium. Virat has been lifting weights, and Varun has been skipping for 2 hours. They are still doing it. They have not stopped. So when did the players start practicing? In the past. शुरू पहले से कर रहे हैं. Are they still practicing or have they stopped? क्या अभी भी कर रहे हैं? Yes, they are still doing it. So present perfect progressive is used to talk about that action that had started sometime in the past and are still continuing. Let's do worksheet 2. Given below is a picture of Mr. Prasad house. Look at the picture carefully and write what the various members of the family have been doing since evening. Do not forget to use the present perfect progressive. Just what we have to use in present perfect progressive, we will have to use has, have, been plus present participle, that is root verb and ing. So let's do it. This is Prasad. Mr. Prasad has been watching a movie. Mr. Prasad has been cooking porridge. You have to use this box. Nikita has been helping her mother, and always remember subject verb agreement. Try to recall subject verb agreement. That's why has or have been used here. So these are the sentences. Go through it. Now worksheet 3. Given below are some situations. Try to find out the reasons behind these. You must guess at least 2 reasons for each. One example has been given to help you. Why is Seema's hair wet? Because she has been swimming. वो swimming कर रही थी ना. Because she has been walking in the rain. उसके बाल गीले क्यों हैं? क्योंकि वो रेन में वॉक कर रही थी. Why is Ninu looking so tired? Because she has been working hard. Because she has been traveling from past. You have to find. You can write it of your in your own words. You can form your own sentence. सोचो क्यों ऐसा हो रहा होगा. So why Kittu is feeling hot? अब यहाँ पर you have to keep in mind कि कुछ different हो रहा है. यहाँ पर action continued नहीं है. Past में action हुआ लेकिन वो continued नहीं है. It is has just completed. Why is Kittu feeling hot? Because he has been driving in non-AC car, or because he has been suffering from fever. Why are Vinny's clothes dirty? Because he has been he has been playing in mud. Because she has been wearing it for long. ऐसा क्यों हो रहा है? Now see, why are Pooja's hand black? You try to find. You can form, as I say always, you can form your own imagination and form the sentences over here. See here, present perfect progressive tense is also used for action that has started sometime in the past and has just completed. पहला केस क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ठीक है. और यहाँ पर एक और कंडीशन आया, एक और केस आया जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ और
अभी वो जस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट परफेक्ट हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ। उस केस में भी हम लोग कौन क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। नाउ सी हियर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऋषि हैज़ बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock, टाइम दे दिया गया, जस्ट सी हियर, पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया। राहुल हैज़ बीन स्विमिंग फॉर 1 hour. नाउ सी हियर, डू द अबव सेंटेंस टेल यू व्हेन डिड ऋषि स्टार्टेड। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में ऋषि हैज़ बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock, तो वो बता दिया है कि 4 o'clock से शुरू किया है, मतलब कब शुरू किया। लेकिन व्हेन डिड राहुल स्टार्ट स्विमिंग, ये नहीं बताया गया है। हाउ लॉन्ग ऋषि हैज़ बीन स्विमिंग, ऋषि कितने देर तक स्विमिंग किया, ये भी क्लियर नहीं है यहाँ पर। हाउ लॉन्ग हैज़ राहुल बीन स्विमिंग, कितना देर से कर रहा है वो पता चल रहा है। अब यहाँ पर remember we use since with the perfect progressive to talk about the starting point of an action. Since when, if you know the time, exact time when the action has begun, you have to use since. लेकिन अगर आपको पता चलता है कि वो कितने देर से कर रहा है, टाइम नहीं पता है लेकिन कितने देर से यूज़ कर रहा है, तब हम लोग यूज़ करते हैं for. Now worksheet 5, complete the following sentences using since for with the present perfect progressive tense. One example has been done for you. Now see here, she has been preparing for her exam for 1 month. यहाँ पर टाइम दिया, कब से कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि 1 महीने से कर रहे हैं, तो यहाँ पर for यूज़ होगा। Similarly second, brushing teeth 2 minutes, यहाँ पर कब से कर रहा है वो नहीं, बस वो 2 मिनट कर रहा है, तो he has been brushing the teeth for 2 minutes. 3 hours, just see, all these are of similar kind. Achha, but here just see here in this sentence, preparing soup evening, अब वो टाइम दे दिया, अब ड्यूरेशन नहीं दिया है, टाइम दिया कब से हो रहा है, तो he has been preparing soup since evening. Now see again, यहाँ पर टाइम परफेक्ट दे दिया है, तो since 10 o'clock. अगर टाइम नहीं दिया रहता परफेक्ट, सही टाइम नहीं दिया रहता तो, या फिर ड्यूरेशन दिया रहता कितने देर तक उसने काम किया, तो फॉर यूज़ होता। सो दिस इज सिंपल वन, जस्ट दिस इज फॉर प्रैक्टिस, डू इट। नाउ वर्कशीट 6, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। व्हेन रवि रीच्ड द ऑफिस, द क्लर्क हैड बीन अरेंजिंग फाइल्स ऑन हिज टेबल। हैड बीन, जस्ट सी इट। व्हेन रवि रीच्ड द ऑफिस, his clerk had been arranging files on his table. He had been doing this job efficiently for 8 years. Time दे दिया क्या? Raj, as usual, had been dreaming about winning a lottery, and Jay had been talking on phone. Now discuss with the friend and decide which of the 3 timelines given below suits the description. So discuss it here. The past perfect progressive, what does it emphasize on? The duration of a past action before another action happened. मतलब जब यहाँ पर रवि reached the office, कोई पर्टिकुलर टाइम में वो his clerk had been arranging files on his table. जब वो पहुँचा वहाँ पर, पास्ट में जब पहुँचा, तो उस वक्त ये काम हो रहा था। और इसमें कौन सा यूज़ होता है फॉर्म? हैड बीन, क्योंकि पास्ट की बात है, तो यहाँ पर यूज़ होगा हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हैड बीन क्योंकि पास्ट एक्शन है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, पास्ट के पर्टिकुलर पॉइंट पर वो काम हो रहा था। नाउ सी हियर, इन द अबव केस, past perfect progressive tense is used to talk about an action. The clerk had been arranging, कौन सी किसके action? The clerk had been arranging files that started before a certain point. कौन सा certain point? जब रवि reached the office and had continued up to that time. उस वक्त तक वो हो रहा था, मतलब जब रवि ऑफिस में पहुंचा, पास्ट की बात है, रवि ऑफिस में पहुंचा तो क्लर्क फाइल्स को अरेंज कर रहा था, और जब तक वो पहुंचा तब तक वो काम चल रहा था। वो रवि के पहुंचने के पहले से शुरू किया हुआ था और वो रवि के पहुंचने के बाद भी वो काम चल रहा था। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
Now let's do it. Complete the following passages by filling in the blanks with the past perfect progressive. Past perfect progressive में क्या होगा? Had been plus present participle, that is V plus ing form, V का ing form. This has to be followed. Now see here, the Director General of the Police told the press correspondents that they had arrested 10 terrorists belonging to ABC group from the south zone of the city. The group had been prowling. प्रॉल मीन्स होता है जब किसी एरिया कोई जब क्राइम करता है तो उस एरिया को अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करता है कि पकड़ा ना जाए, तो उसको कहते हैं प्राउलिंग. क्राइम कमिट करने के लिए जब क्रिमिनल्स एक जगह को छानबीन करते हैं, दैट इज़ प्राउल. सो इन द सिटी फॉर 4 months द मेंबर्स हैड बीन ऑपरेटिंग एट 2 levels. 2 ऑपरेट मतलब काम कर रहे थे. 2 of them had been सप्लाई कर रहे थे मिल्क टू द आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड हैड बीन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेटअप. दे हैड बीन डिकोडिंग मतलब उसको डिकोड मीन्स उस चीज़ को सॉल्व कर रहे थे, उसका मतलब निकाल रहे थे. द आर्मी सीक्रेट्स एंड हैड बीन सेंडिंग दैट डिकोडेड मैसेज टू देयर चीफ. द अदर मेंबर्स हैड बीन सप्लाइंग दैम सोफिस्टिकेटेड टूल्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का हाई लेवल का बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स और वेपन्स को. वेपन्स मीन्स जो हथियार होता है उसको कहते हैं वेपन्स फॉर द पर्पस. दे हैड बीन स्मगलिंग मतलब स्मगलिंग क्या होता है? जब इलीगल वे में कोई चीज़ सप्लाई किया जाता है तो उसको कहते हैं स्मगलिंग. दिस वेपन्स फ्रॉम नेबरहुड. नाउ सी हियर, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू टॉक about action that started before a certain point in the past and had continued up to that point. मतलब उस पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के एक पॉइंट तक वो काम चल रहा था. नाउ दिस वर्कशीट 8. अ मार्क्समैन हैड लूटेड द कैश केप्ट इन ऑफिस बाय थ्रेटनिंग मतलब डरा करके द कैशियर विद द पिस्टल. यहाँ पर कट गया. द पुलिस वांटेड टू इंक्वायर what different people in the office had been doing at that time. Taking hints from words provided, complete the following statement in the past progressive tense. You had been police officer. What had you been doing when you heard the pistol shot? I had been giving डिक्टेशन टू माई सेक्रेटरी. पास्ट एक्शन में उस वक्त वो क्या कर रहा था जिस वक्त वो काम हो रहा था. डिक्टेशन टू माई सेक्रेटरी, यू हैव टू यूज व्हाट इज देयर इन द ब्रैकेट. आई हैड बीन स्लीपिंग इन माई केबिन. जब उस वक्त वो एक्शन हो रहा था, यू नो. सो दैट इज द एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट पॉइंट. जब तक वो चोरी हो रही थी उसके पहले से ही वो बात कर रहा था, उसके पहले से ही वो सो रहा था. सो आई हैड बीन टॉकिंग ऑन द फोन. आई हैड बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर व्हेन दिस वाज हैपनिंग. वर्क ऑन द कंप्यूटर. जस्ट सी हाउ द सेंटेंसेस हैज बीन यूज्ड. हैड बीन प्रिपेयरिंग पास्ट एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म. पास्ट एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म. This is past perfect progressive. When it is used to talk about action that has started before a certain point in the past, and continued up to that point. पास्ट में वो सो ही रहा था, उसी बीच में चोर आया, उसने चोरी की और वो काम चल ही रहा था. वो जो काम है उस पॉइंट पर जब ये चोरी हो रही थी उस पॉइंट पर कोई दूसरा काम भी चल रहा था. नाउ लेट्स वर्कशीट 9. मीट मैडम प्रिडिक्टा. विथ हर सुपर पावर शी कैन सी what the people had been doing just before meeting her. Not just that, she can also tell for how long, or just before meeting her, and just that she can also tell for how long or since when the person had been doing that particular thing. Look at the following picture which she can see. Write what various people, alag alag jo various means different people, had been doing before meeting her. For example, one has been done for you. Now say, with my superpower I can see
that before coming here you had been sleeping for 3 hours. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि कोई एक्शन जो हुआ इट स्टार्टेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट, इसके पास आने से पहले वो वर्क हो रहा था और वो जस्ट कंप्लीट हुआ है. स्लीप ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स. इनके पास आने से पहले ये 3 घंटे से सो रहा था. हैड बीन टॉकिंग फॉर 1 आवर. सबके बारे में ये प्रिडिक्शन मिसेस प्रिडिक्टा कर रही है. he had been reading newspaper since. These are simple sentences you can form by the hints given. Celebrate with friends. Now worksheet 10. Read the following sentences and tick the correct option from the choices given in the box. What is this? This is, the picture is not clear. I am just reading it out for you. She had been dancing. अच्छा, you tell me यहाँ पर क्या होगा? since होगा कि for होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम परफेक्ट दिया हुआ है, पर्टिकुलर टाइम से वो काम कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? since हो जाएगा. Now second is they had been planning to start a dance group. अब यहाँ पर क्या होगा? for, क्योंकि यहाँ पर 10 years दिया है, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया, ड्यूरेशन दिया हुआ है. Now here Ramit had been working in the school. तो यहाँ पर टाइम दे दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? since. Just this, do it yourself. This is very easy. Do it yourself. She had been, you have understood. जब पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम दे दिया जाए कि कब से वो कर रहा है, टाइम डिफाइन कर दिया जाए तो since लगता है, ड्यूरेशन हो तो for लगता है. Do it yourself. Find out the error. By now you have understood how to do it. Since 3 years, I hope you have understood. If you will practice, you will be able to do it properly. So that's all. And keep revising. Bye. Bye-bye.